Yes. Yes, sir, but first four lines were completely explained. Okay. First four lines were done, and now we have to continue from there. Huh? Just give me a second. Let's wait for some more people to join. Who is this? Okay, so let's start. All right. So a thing of beauty. So do you want me to start from the beginning again, or do you want me to continue from there on? Yes. Do you want me to continue from the after the first paragraph, from the Yes, second sir, from paragraph, beginning. from beginning? Okay. Chal. Yes, sir. Once again, this whole poem is about. Yesterday we had a good introduction about this. Yes. Anybody who can tell me what this whole poem is about? So it's about a young shepherd who saw the goddess of moon, whose name is Cynthia. He is enchanted by her beauty, and that's why he is loitering him and wandering him, searching him on the Mount Lepus to to see her or to reach to that goddess. Mhm. Okay, yes, exactly. So, this poem has been written by John Keats. He's one of the most celebrated poets. Okay, and he is a poet who writes much about nature, much about love and nature. So, in this poem also, he has taken up this topic of nature and the beauty of nature and what and what else and the union of humans with the beauty of nature and what it does to you, है ना? वो क्या करता है आपके साथ अगर आप नेचर से जुड़ जाते हो तो आपको क्या होता है, क्या फायदा मिलता है, क्या नुकसान होता है, उस पर बात करी है. ठीक है. So actually the theme is uniting with nature, but the example has been taken from a love story. Okay, so on the front, it's a love story, a fictional love story of a shepherd with a goddess and his search, to reach that goddess. But ultimately, if you look behind the scene, if you look or read in between the lines, you will understand that this is simply talking about getting closer to the nature, uniting with the nature. Okay? So, yes, are you guys there? Yes, sir. Okay, so once again, this says John Keats has written this poem, and this is based on a Greek legend. ग्रीक कहानी पे बेस है ये. एंड इसमें जो हीरो है वो शेफर्ड है. ही इज अ शेफर्ड हु लिव्स ऑन माउंट Latmus, sorry, and he is in search of Cynthia, the moon goddess, which is an epitome of beauty, an example of beauty. Okay. So he is in search of that moon goddess, that beautiful lady, and he lives on that mountain, so he is wandering in the nearby areas in search of her. He is wandering in the nearby areas in search of
ठीक है? So when he is wandering, he is observing the nature, the beauty of the nature, and he is expressing his thoughts. ठीक? Clear? So once again, the first para says, a thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. A thing of beauty is a joy forever. And its loveliness increases. कि कोई भी चीज जो खूबसूरत होती है वो हमेशा हमेश के लिए खूबसूरत होती है. इटर्निटी एक वर्ड यूज किया था कल मैंने. इटर्नल. Did you get the meaning of that word? Eternity or eternal? Anybody? Yes, sir. Forever. Forever. You know, something No in. which is not going to die and it will be there for always. It won't die. It won't fade out. है ना? Till eternity. All right. So this thing of beauty, that moment of beauty, or that image of that beautiful thing which has been captured in a particular moment by our mind, that remains there in our mind, in some corner of our mind, and we time to time, as and when required, we take it out or we recall that memory and we get to see that beauty as it is whenever we recall it. And when we see that beauty takes us away from the worries of our worldly life, from the stress of our worldly life, from the problems of our human nature or worldly life. ठीक है? So that is why its loveliness, क्योंकि वो हमको खुशी दे रही है, हमको आराम दे रही है, हमको सुकून दे रही है, जब जब हम उसको दोहरा लेते हैं तो क्या होता है, उसका जो प्यारापन है वो हमको और से और अच्छा लगता चला जाता है. तो वो लवलीनेस उसकी बढ़ती चली जाती है, इंक्रीज होती चली जाती है. इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस. और ये जो ब्यूटी है उस मोमेंट की, उस इमेज की, उस ब्यूटीफुल चीज की, वो ब्यूटी जिस तरीके से, जिस इमेज के फॉर्म में हमारे पास मौजूद है हमारे दिमागों में, जिस कोने में, वो कभी भी फेड आउट नहीं होता, कभी भी जीरो नहीं होता, नथिंगनेस में नहीं कन्वर्ट हो जाता, कुछ भी न होने में नहीं कन्वर्ट होता. दैट मीन्स वो जीरो नहीं होता, कभी भी फेड आउट नहीं होता, कभी भी खत्म नहीं होता. वो हमेशा समथिंग रहता है जिसकी बहुत ज्यादा अहमियत हमें है. ठीक है? बट वील कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस. बावर हमने डिस्कस किया था yesterday. We discussed that a bower is a beautiful place, full of life, full of energy, because of the water source in, or अगल बगल फॉरेस्ट एरिया हो और उसके बीच में एक ऐसा पानी का स्रोत हो जहां पर, जिसके आसपास पेड़ पौधे उग रहे हैं, पनप रहे हैं, और उसी के आसपास पानी को पा करके दूसरी सारी जिंदगियां या लिविंग बीइंग्स वहां खींचे चले आते हैं और सब मिलजुल करके वहां उस नेचुरल रिसोर्स का, वाटर का, या जिंदगी देने वाले उस पानी का फायदा उठाते हैं और सब खुश रहते हैं, सब मिलजुल करके उसको एंजॉय करते हैं. इन द सिमिलर वे दिस ब्यूटी, व्हाट इट डज, ये जो ब्यूटीफुल इंप्रेशन हमारे दिमाग में पड़ गया है वो हमें क्या करता है, हमें ये खूबसूरत बावर बना देता है, हमारे दिमाग में एक बावर सा बना देता है कि जब हम उस ब्यूटीफुल मोमेंट को याद करते हैं तो हम उस बावर में पहुंच जाते हैं जहां पर कि अगर आप पहुंच जाइए तो आपको बहुत खुशी मिलेगी, बहुत सुकून मिलेगा, बहुत पीस मिलेगी,
और नेचर के साथ जुड़ जाएंगे। और आगे की लाइनों में है फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। ये जो बाबर है, अगर आप इसके पास पहुंच जाइए या इसमें आपको मौका मिल जाए सोने का, वहां पर स्लीप करने का, सोने का अगर आपको मौका मिल जाए तो क्या होगा, आपकी नींद बड़ी अच्छी नींद आएगी। और उस अच्छी नींद में जो सपने देखेंगे आप, वो बहुत ही खूबसूरत और अच्छे सपने देखेंगे। स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ, और जाहिर सी बात है खुली ताजी हवा मिलेगी आपको, तो यू विल बी हेल्दी। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और दुनिया के शोर शराबे से, इंसानी जिंदगी से, प्रैक्टिकल लाइफ के शोर शराबे से आप दूर होकर के क्वाइट ब्रीथ करेंगे, सुकून से आराम आराम से सांस ले पाएंगे, चैन की सांस ले पाएंगे। So that is the first para. Is it clear now? I've revised this first para. Now we'll be moving on to the second para. Is it clear, guys? Yes. Sarvesh, Aditya, and who else? Shaurya, Kalash, Vidisha, Shruti, Disha, Shrishti, Saloni, Janvi, Harshita, Vedant. Is it clear? Did you get me? Yes, are we on the same page? Yes, sir. Okay. All right, so let's move on to the second paragraph. So therefore, on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth. Second paragraph कहता है a flowery band, therefore on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth. क्या कह रहा है पोएट इसमें, कि रोज, हर रोज हम क्या करते हैं कि क्या करते हैं, wreathing का मतलब जानते हैं, कंबाइन होना, जुड़ना। तो हम क्या करते हैं, माला जो होती है, फूलों की माला, कभी देखा होगा आपने, फूलों की माला जो होती है उसको हम क्या करते हैं, ढेर सारे फूलों को कंबाइन करके बनाते हैं ना, जोड़ जोड़ के। तो हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग क्रिएशंस ऑफ नेचर को आपस में जोड़ जोड़ करके हम क्या बनाते हैं, अपनी खुशी के लिए कुछ बनाते हैं। So what are we doing is we are wreathing, हम बुन रहे हैं, बना रहे हैं, गूंथ रहे हैं। wreathing का मतलब गूंथना, तो हम गूंथ करके बना रहे हैं माला of different flowers. Every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth. तो जब हम ऐसा करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, नेचुरल चीजों से हमको जो खुशी मिलती है वो उसका एग्जाम्पल है वो माला। हम उस माला को बनाते हैं गूंथ गूंथ करके, तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हम नेचर के साथ जुड़ रहे हैं, हम नेचर के साथ जुड़ रहे हैं और उस माला को लेकर के हम खुश होते हैं, उसको अपने ऊपर डालते हैं और उसको अच्छी अलग अलग चीजों पर उसको इस्तेमाल करते हैं और उससे हमको खुशी मिलती है, उससे हमको खुशी मिलती है। तो हम जब नेचर से जुड़ते हैं तब हमको खुशी मिलती है। What are we doing is we are trying to bind ourselves with the nature. हम नेचर से जुड़ने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. So in other words, what are we doing is we are creating a string, एक धागा सा, एक लड़ी सी, एक माला सा बना रहे हैं फ्लावर्स का, है ना, या और क्या कर रहे हैं, या हम नेचर की दी हुई रिसोर्सेस, हम फ्लावर को कैसे ले सकते हैं, इस सेंस में भी सोच सकते हैं कि ये क्या है, ये नेचर के द्वारा दी गई
रिसोर्स है जो हमको फायदा पहुंचाती है, हमको खुशियां पहुंचाती है। तो ये नेचर का की दी हुई बून्स एंड बाउंटीज हैं, जो जिसको हम रिकॉल करते हैं, उसको हम जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं और नेचर का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमको इतनी खूबसूरत और अच्छी और फायदेमंद चीजें दी हैं उसने, है ना। So what are we doing is we are actually recalling those memories, and we are joining the different beautiful things, boons and bounties given to us by nature, and we are trying to derive joy, peace, satisfaction out of the resources of nature. ठीक है? So when we do this, what happens? Spite of despondence of the inhuman dearth, spite of despondence of the inhuman dearth, of noble natures of the gloomy days. अगली दो लाइनें क्या कह रही हैं? Spite of despondence of the inhuman dearth, spite of यानी इन सब खराबियों के बावजूद, इन सब खराबियों के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, जो खराबी, जो इंसानी फितरत की नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव बातें हैं इंसान के अंदर, कमियां हैं जो, ऑफ नोबल नेचर्स एंड ऑफ द ग्लूमी डेज, और उदासी वाले दिन। ग्लूमी, ग्लूम का मतलब होता है उदास, तो ग्लूमी डेज उदासी वाले दिन, परेशानी वाले दिन, दुख वाले दिन, उदासी वाले दिन। ऑफ द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज, तीसरी लाइन है, ऑफ द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज, वो सारे जो खराब और गंदे और डार्क यानी नेगेटिव, ग्रे शेडेड, ब्लैक शेडेड जो दिन है हमारे, यानी जो खराब दिन है हमारे या खराब तरीके हैं हमारे, उन सब चीजों को क्या करती है? उन सब चीजों के बावजूद, ये हमारी फितरत के अंदर मौजूद है, हमारी अर्थली प्रैक्टिकल जो लाइफ है उसका ये पार्ट है। सारी खराबियां, सारा अफसोस, सारा सैडनेस, सारा ग्लूम, सारी निगेटिविटी, ये सब क्या है? ये इंसानी कैरेक्टर का पार्ट है। तो इन सब पार्ट्स के होते हुए भी, इन स्पाइट ऑफ दिस, इन सब के होते हुए भी, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल, कोई ऐसा शेप ऑफ ब्यूटी है, कोई ऐसा ब्यूटीफुल चीज है जो क्या करती है? ये सारी परेशानियों की चीजों से पर्दा हटा देती है और हमें क्या करता है? फ्रॉम अ डार्क स्पिरिट्स, यानी हमारी आत्माओं पर से ये जो खराबियां हैं, जो निगेटिविटी है, जो परेशानियां हैं, जो दुख है, उन सब चीजों पर एक पर्दा डाल देती है, यानी उसको अलग अलग कर देती है, उसको हटा देती है, छुपा देती है इन सब खराबियों को। ये कोई ब्यूटीफुल चीज, यानी कोई ऐसी ब्यूटीफुल चीज या उसका एग्जाम्पल या वो ब्यूटीफुल मोमेंट जो है वो हमको भुलवा देता है, एक तरीके से लोकल लैंग्वेज में अपनी भुलवा देना, या हमको बेवकूफ बना देता है, या हमको थोड़ी देर के लिए उससे डिटैच कर देता है, उससे अलग कर देता है उन सब परेशानियों से, और हमको अच्छा अच्छा यानी पॉजिटिव साइड दिखाने लगता है। ठीक है? Made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. Clear हो रहा है? Yes? Yes, sir. Okay. So once again, sadness, disappointment, and dejection, stress, all these are what? Part and parcel of the human life. These are all
part and parcel of our human life. Now, when these negativity or these negative things of human life, they are bothering us, then there is this beautiful thing which gives us some relief for some moments. When we remember it, it gives us a relief out of these things. तो ये जो खूबसूरती का एग्जाम्पल है हमारे दिमाग में, जो इमेज है हमारे दिमाग में, जब हम उसको रिकॉल करते हैं तो ये सारी परेशानियों के ऊपर पर्दा पड़ जाता है. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ देन. सो व्हाट आर दीज ब्यूटीफुल थिंग्स? यहाँ जो हमने बात करी कि ये जो परेशानियां हैं इनके ऊपर एक खूबसूरत सी चीज होती है जो पर्दा डाल देती है, तो वो कौन सी खूबसूरत चीज है? तो अब जब वो खूबसूरत चीज नेक्स्ट पैराग्राफ में दी हुई, एग्जाम्पल्स ऑफ नेचर की खूबसूरतियां जो है वो नेक्स्ट पैराग्राफ में दी गई हैं. और नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है? कोई एक पढ़ दे, क्या है? जल्दी से पढ़ दीजिए, 2-3 लाइन. Sir, such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon for simple sheep, and such are daffodils. With the green world they live in and clear rills, that for themselves a cooling covert make gains the hot season. Exactly, yes. So it says, now it is giving you those examples of beautiful things that nature has given us. Yes? So the examples are such the sun, the moon, the trees old and young, sprouting a shady boon. Such the sun, तो जैसे कि ये खूबसूरत चीजों के एग्जाम्पल क्या है नेचर के द्वारा दिए गए हमको, is the sun, the moon, the trees old and young. वो ट्रीज जो पुराने थे और वो चीज जो नए नए अब आ रहे हैं. स्प्राउटिंग अ शेडी बून. बून का मतलब होता है वरदान. कल हमने डिस्कस किया था बून्स एंड बाउंटीज, मैंने बताया था आपको एक फ्रेज. यहां पर भी देखिए बून आ रहा है. बून का मतलब है वरदान, शेडी वरदान. तो ये जो सन एंड द मून और उसके बाद ट्रीज ओल्ड एंड यंग, ये जो ट्रीज हैं ये ओल्ड एंड यंग क्या करते हैं हमको? ये शेड के फॉर्म में, ये शेड जानते हैं ना, छाया. तो छाया के फॉर्म में ये जो वरदान हमको प्रदान कर रहे हैं, या ये जो सुकून हमको देते हैं इस छाया के फॉर्म में, वो या फिर सिंपल शीप. अगला क्या है? For simple sheep. Sheep is an example of innocence, मासूमियत, है ना? So for simple sheep, and such are daffodils with green world they live in. And such are daffodils. तो daffodils वो flowers जो वैलीज में होते हैं, जंगली फ्लावर्स, कि उनकी एक चादर सी वैलीज में फैल जाती है और उनको हम देखते हैं तो हमको बहुत सुकून मिलता है, अच्छा लगता है. उनकी खुशबू फैली हुई होती है. और वो किस जगह पर रहते हैं? ग्रीन वर्ल्ड में. वो उन फॉरेस्ट इलाकों में, ग्रीन वैलीज के अंदर वो ब्यूटीफुल डैफोडिल फूल पनपते हैं. ठीक है? So all these things are various objects of natural beauty, of nature's boons and bounties, of nature's abundance. You know, the nature has given us all these things. We have categorized them according to our needs as useful and not useful. But ultimately, if we go into the literal meaning of these things, and if we look at these things from different angles,
we will see that all of these things are in some or the other way useful to one or the other life which is here existing on the earth. जो भी छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज जो नेचर ने हमको दिया है, हमें ये दिखता है, अगर हम उसको सही एंगल से देखें तो हमें ये समझ में आएगा कि इवन एक चूंटी की भी जरूरत है, एक पक्षी की भी जरूरत है, एक बैक्टीरिया की भी जरूरत है और एक इंसान की भी जरूरत है, पत्थर पहाड़ की भी जरूरत है, पानी की भी जरूरत है। यानी जितनी चीजें नेचर ने हमको दिया है वो किसी ना किसी मकसद से दिया है, उसकी कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल से इंपॉर्टेंस जरूर है। ठीक है, सो ये जो चीजें हैं, जो एग्जांपल्स हैं नेचर के, for simple sheep such as daffodils, sun, moon, trees old and young, sheep, daffodils living in forests, clear rills, साफ सुथरा पानी। Rills are those पतली पतली streams of water जो पहाड़ी इलाकों में बर्फ के पिघलने से बारिश के पानी का इकट्ठा हो जाना और वहां से नीचे की तरफ बहना और पानी का बर्फ का पिघल करके पानी बन करके बहना, तो वो जो पतली पतली धारियों से होते हुए वो फिर जाकर के किसी नदी वगैरह में जुड़ जाता है या किसी लेक में जाकर के जुड़ जाता है। जब वो पानी पहाड़ों से होकर के उतरता है नीचे की तरफ तो वो पानी इज प्योर, it is clear, crystal clear and pure. तो उसी को rills कहते हैं, clear rills that for themselves a cooling covert make against the hot season. तो ये क्या करता है, ये जो clear rills हैं ये एक्चुअली क्या करते हैं, ये एक कूलिंग सिस्टम है नेचर का। यानी एक तरफ से सूरज की गर्मी है, धूप की तपिश है और दूसरी तरफ से नेचर ने हमको सुकून देने वाला, ठंडक देने वाला ये पानी भी दे रखा है। तो उसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है, सूरज की भी और उसकी तपिश की और उसकी गर्मी की और इसकी रोशनी की, और इधर से उसको काउंटर करने के लिए, उसकी गर्मी को शांत करने के लिए हमको सुकून वाला ठंडा सा, अच्छा सा, साफ सुथरा सा, प्योर सा पानी भी नेचर ने दिया। So there is a balance in nature. It shows us that there is always a balance in nature. At one side it is giving us sun, then the other side it is giving us moon. It's also giving us sun to provide us heat, then it's also giving us cold water. So it's like a balance which the nature is trying to make for us or for any living being whatsoever that is existing on this earth. Yes? Understood? Is it clear Yes, sir. now? Okay, Yes, sir. great. Now, let's move on to the next paragraph, which says, the mid-forest brake, rich with sprinkling fair musk rose blooms, and such too is the grandeur of dooms. क्या कह रहा है यहां पर? अब अगले पैराग्राफ में, अभी तक हमसे क्या बात हुई, सबसे पहले पैराग्राफ में हमसे कहा गया, इंट्रोडक्शन दिया गया कि एक ब्यूटीफुल चीज होती है, वो हमेशा हमेश के लिए बाकी रहती है और वो ऐसी चीज होती है जो हमारे दिमाग में बस जाती है। तो वो एक्चुअली क्या चीज है उसके बारे में बताया। दूसरी बात, दूसरे पैराग्राफ में क्या बात लेकर के आए हैं कि ये जो ब्यूटीफुल चीज है हमारे दिमाग में बस जाती है, उसका फायदा क्या है हमारे लिए। तो फायदा क्या है कि हमको हमारे दुखों से, हमारी वर्ल्डली लाइफ की परेशानियों से, हमारे स्ट्रेसेस से, हमारे ग्लूमी डेज से हमको वो दूर करता है, या हमारे लिए एक पर्दा सा बना देता है कि हमको वो खराबियां, वो बुराइयां, वो कमजोरियां, वो उदासियां न दिखें। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ में कहता है कि वो खूबसूरत चीज तो है, वो हमारे लिए अच्छा भी है, हमको ग्लूमी डेज से दूर करता है, लेकिन वो है क्या?
तो जब वो है क्या, उसके एग्जाम्पल्स दिए हैं थर्ड पैराग्राफ में। थर्ड पैराग्राफ में एग्जाम्पल्स हैं क्या? सूरज, चांद, पेड़, young or old. Then we have sheep or things which are innocent like sheep. Here sheep signifies the innocence of nature. So simple things like sheep, है ना? Then we also have beautiful things that are there available widely in the nature, in the forest, like daffodils. Daffodils वगैरह जो इस तरह के फूल हैं, वो हमारे लिए एबंडेंस में नेचर ने अपने आप वाइल्ड में, फॉरेस्ट में पैदा करा है, हमारे सुकून के लिए, हमारी खुशहाली के लिए, हमारी खुशियों के लिए। And then to balance the heat of the sun, it has also given us beautiful, cold, clear, pure water which is flowing out of the mountains, and which gives us the cool effect against the hot the heat of the sun. Yes. So yahan tak to ye hua. Ab now what it says is that in the last paragraph it says the mid forest brake, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms, and such too is the grandeur of dooms we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring onto us from the heavens brink. Okay? Now, in these last lines, poet also says, Mr. Keats is also indicating something. It is also indicating us that these objects of nature, they are also perishable. क्या मतलब हुआ इसका? कोई बताएगा क्या मतलब हुआ इसका? ये जो आखिरी पैराग्राफ है, ये जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई को डिस्क्लोज कर रहा है। कोई बताए? Come on, anyone? Yes? Come on, people, fast. Let's finish this before the period ends. Yes, anybody who wants to give it a try? Come, speak up. Class? Yes, anybody? Kalash, Sarvesh, Prachi, Udita, Saloni, Vedant, Shivam, Mehak, Priya, Vafia, Surbi, Yash, Saifullah. Anyone? Yes, no, maybe. Speak up, don't write, please. Not just write. Speak up. बोलिए. बोलिए भाई. Class. Are you guys there, or are you guys like sleeping, or have you left, or what? Are you there? Yes, sir. Okay. Arshita, so is it clear till now? What, sir? Is it clear? Any confusions?
No, sir. Okay. So would you like to try what this last paragraph says? No, sir. Okay. Anybody else who wants to try? Sir, Hmm. Come on, come on, come on. Fast. Yes? No? Come on. Say it. Yes, no, maybe. Anything? Okay. Are you listening or not? बस इतना बताओ मुझे. सुन रहे हो? Yes, sir. Okay. All right. So the last paragraph, as I said, it talks us about the perishable nature of the things that this nature has provided us. The perishable characteristic of the things that are there in nature. Perishable होता है मर करके खत्म हो जाना, एंड हो जाना. तो जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है कि वो खत्म होती है ना. तो यहां पर पोएट ने इन लाइनों में एंड ऑफ लाइफ की तरफ इशारा किया है कि कोई भी चीज कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कितनी भी खराब क्यों ना हो, कितनी भी ब्यूटीफुल क्यों ना हो, उसको एक ना एक दिन खत्म होना ही है. यस. तो यहां पर ये दर्शा रहा है कि लाइफ or anything that has been produced by nature in the form of life, in the form of beauty, that also has to end some or the other day. वो भी खत्म हो जाएगा. लेकिन इसके पीछे ये भी दर्शा रहा है कि एक लाइफ साइकिल है जिसमें ग्रोथ होती है, फिर डेथ होती है. इसमें कोई चीज पनपती है और फिर उसका एंड आता है. ठीक है. सो ये जो ब्यूटीफुल चीजें हैं ये हमको मिली हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये खत्म नहीं होंगी, ये खत्म हो जाएंगी. लेकिन हमने पहले ही बात करी थी कि वो जो मोमेंट है जिस वक्त वो चीज हमको खूबसूरत लगी, दैट मोमेंट विल ऑलवेज बी देयर इन आवर मेमोरी. It will always be there in that corner of our memory, and it will stay there forever. It is not going to end. So the benefit that the memory provides, that is not going to end, but physically that particular example of beauty is going to die or end one or the other day. ठीक है. So it says that death is followed by birth. When there is a birth, death is must. If something has taken birth, it is going to die. ठीक है. So in these lines, it says that, and mid forest brake, rich with the sprinkling of fair musk rose blooms. और ये जो फॉरेस्ट के बीच में मस्क रोज, मस्क जैसी खुशबू देने वाला जो रोज है वो खिला रहता है, ब्लूम होता रहता है. लेकिन उन सब ब्लूम्स के बीच में क्या होता है? डेथ का भी इंडिकेशन है. जैसे कि किसी जमाने में हमारे बाप दादाओं में से अगर हम बात करें, if we talk about our ancestors, people who have died in the past, there were many people who were mighty and who have done amazing work in their life, but now they are dead. So it says that all those people who were amazing at one point of time,
who were beyond the other creations, they did something extraordinary. They also died and they have also gone out of this world. ठीक है. सो वो जो सारे लोग, जो हमारे वो पुराने लोग जिनके बारे में हम बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां कहते हैं और अपने आने वाली जनरेशंस को बताते हैं, जैसे गांधी जी, जैसे शेक्सपियर, जैसे आइंस्टाइन, इस तरह के जितने लोग, बड़े बड़े लोग जो हमारे आए और चले गए और हमारे लिए कोई ना कोई जबरदस्त चीज छोड़ करके चले गए, वो सारे लोगों की जो बातें हैं वो हम अपने आने वाली जनरेशन से करते हैं, टू गिव देम, टू सेट एन एग्जाम्पल टू देम और टू प्रोवाइड एन इंस्पिरेशन टू देम. What is the reason for us to say those, talk about those previous people? Is to set an example for them, to motivate them, to inspire them to do something good, to do something great out of this life. That these people came in this world, they gave us something nice, they did something for the world, and then they have gone. So if we are also coming, or our children are also coming, we must motivate them, inspire them to leave a mark on this earth before going, to do something productive and useful for the humanity and for the earth and its creations, so that it can last forever. So when we have come, we must do something productive. We must understand the purpose of our existence. We must act accordingly and do something beneficial for the earth, for the society, for the humanity, and then leave this earth. So we have imagined for the mighty dead all lovely tales that we have heard or read. वही कह रहा है कि अपने पुराने लोगों की, जो बड़े बड़े लोग थे, उनकी हम कहानियां एक दूसरे को सुनते सुनाते हैं, और वो इसीलिए सुनाते हैं ताकि हम एक दूसरे को इंस्पायर कर सकें, मोटिवेट कर सकें उन सब अच्छी अच्छी बातों से. और ये सारी चीजें क्या करती हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये सारी ब्यूटी ऑफ नेचर, ये सारे पुराने लोग जिन्होंने बहुत कुछ अच्छा करके जो लोग गए हैं इस दुनिया से, ये सारे लोग वैसे ही हैं जैसे कि नेचर का वो इमॉर्टल फाउंटेन, नेचर or an endless fountain of immortal drink pouring onto us from the heaven spring. आखिरी दो लाइनें हैं, an immortal tale, sorry, an endless fountain of immortal drink, कि ये सारी चीजें वैसे ही हैं जैसे कि हेवन से हमारे ऊपर ब्रिंक होता है किनारा. फाउंटेन इज झरना और ब्रिंक इज किनारा. तो जब हेवन के किनारे से, स्वर्ग के किनारे से हमारे ऊपर लगातार क्या हो रहा है, इमॉर्टल, कभी ना खत्म होने वाला, मरने वाला, अजय अमर जो फाउंटेन है वो हमारे ऊपर गिरता रहता है. वो क्या है, वो नेचर की बोन्स एंड बाउंटीज, पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवन स्प्रिंग. तो ये जो हेवन से, स्वर्ग से, जन्नत से हमारे ऊपर नेचर का फाउंटेन, किस चीज का फाउंटेन, ऑफ नेचर्स बोन्स एंड बाउंटीज, उसका जो फाउंटेन हमारे ऊपर गिरता रह रहा है, that is eternal, that is not going to stop, which means to say that nature is not going to stop giving us its beautiful things. It depends on us how we are going to utilize them properly, nicely, for us and for the betterment of the whole humanity and the earth after we are gone, even after we are gone. So that is the whole poem, guys. Is it clear? Is it clear? Come on, fast. Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. Chalo then, what's the time? Do we still have time? Do we still have time? Come on, say it fast. Do we still have time? Or not?
Do we still have time? Yes, class. Fast, fast, fast. No, sir. No? Chalo then. Thank you. We'll meet tomorrow. All right? Thank you, Thank you, sir. sir. Thank Okay, you, thank sir. you.